भी अगर आप सोच रहे हैं कि बेस आने वाला है, डोंट एक्सपेक्ट दैट, हल्का सा। Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm back with another unboxing video. And as per your request, I've got creative today. So आज हम creative speakers के बारे में बात करेंगे. I know some of you guys like creative speaker a lot. Even I used to like the speaker a lot. And right now this is not my choice because there are two basic reasons behind that. First, which is very important, after sale service in India is really poor for creative. So अभी इस तरह का सर्विस सेंटर वगैरह काफ़ी कम हो चुके हैं क्रिएटिव के। दूसरी चीज़ पे आता हूँ जो कि क्वालिटी। अगर आप 10 साल पहले का कोई भी क्रिएटिव का स्पीकर चेक करें, उसकी आवाज़ में एक जादू था। Now if you talk about speakers which is produced nowadays, नहीं है इतना अच्छा। F&D Philips is far better at the same price. So now you must be thinking, then why am I making this video for creative? There is a model creative A120. We will be talking about this model. वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा. So we're gonna talk about creative A120 speaker. Now ये स्पीकर मैंने क्यों चूज़ किया है? Creative A120 is a really nice speaker if in case your budget is below 1500 rupees. Now let's say I am a consumer. मेरे पास एक डेस्कटॉप है और मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे कुछ म्यूज़िक सुनना है, हेडफोन्स में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ. आई वांट लिटिल स्पीकर्स देयर. तो कभी कभी यूट्यूब देख लिया या कुछ गाने सुन लिए या मूवी देख लिया. और इफ़ इन केस आई हैव एन LED एंड आई डोंट लाइक द LED साउंड आउटपुट, और LED का स्पीकर ख़राब हो गया है, और मे बी अ लिटिल अपग्रेड बट विदाउट स्पेंडिंग मोर देन 1500. सो अगर मैं बात करूँ अदर कंपनीज इंटेक्स, फिलिप्स, F&D, इस रेंज के स्पीकर्स के बारे में, 1500 के अंदर अगर आपको कोई सबसे अच्छा स्पीकर मिलता है वो है क्रिएटिव A120. यस. और बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की. सो काफ़ी सस्ता है. अगर ख़राब हो गया तो इतना नहीं बुरा लगेगा. इट्स ओनली 1500 रुपीज़. वैसे लेट मी टेल यू, स्पीकर इतने जल्दी नहीं ख़राब होते हैं. Now definitely you can consider if your budget is 1500. Although it doesn't have a Bluetooth, it doesn't have a USB. Only aux 3.5 mm. That's because I told you LED और कंप्यूटर, क्योंकि फ़ोन के साथ तो बहुत ही कम लोग हैं जो aux पे यूज़ करना पसंद करते हैं. Now enough with the conversation about creative. Let's go ahead and unbox this box and see what is inside, how is this sound, why I really like. So let's go ahead and unbox this, and after that I'll share my review. Alright, so this is the speaker. Now if I talk about the build quality, at 1500 the build quality is best compared to any competitor. Okay, there is a light when you switch it on. यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल जाएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. क्रिएटिव लोगो है. बूफर इसका नीचे की तरफ दिया गया है. आई विल शो यू. छोटा सा है लेकिन ठीक है, इफेक्टिव है. Alright, here comes my feedback. The speakers are really fabulous. You will feel that you're playing a 50,000 speaker at a volume of 10%. So it doesn't have a distortion. It does have a quality music output. So बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही कुछ सोनी का 5.1 जैसे 9200 करके एक मॉडल है, उसको आपने फॉर एग्जांपल 10 या 8 के आवाज़ पे बजाया हुआ है. सो इट्स मोर लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो क्वालिटी है. लुक की बात करें, आगे इस तरह का कवर दिया गया है.
सो बात करते हैं क्वालिटी की। स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। क्रिएटिव का लोगो यहाँ मिलता है आपको एंड a cloth finishing here, looks very premium once you keep next to your desktop monitor. Woofer भी अच्छा है, it's not that heavy। अगर आप सोच रहे कि बेस आने वाला है, don't expect that। हल्का सा बेस इफेक्ट आता है but not really, not punchy bass at all। सोचिए, you are spending 1500 rupees, you are looking for quality, you are not looking for quantity। उस हिसाब से this is best। You do get that cable here, you get this kind of aux cable, it is 3.5 mm, however you do get an adapter over here। so इसमें क्या होता है, आप अपने टेबल के डेस्क पे इस तरह से लग सकते हैं and then you can increase the volume, decrease the volume, so it is really helpful। I am using one of this speaker in my home computer table पे। I usually use that to watch YouTube videos, sometimes news। I've been using it from past 2 years, अभी तक तो खराब हुआ नहीं and build quality is solid, wooden, plastic, so it's a good speaker। you can really spend 1500 rupees। Amazon या Flipkart पे अगर आपको इससे अच्छा डील मिले below 1500, go ahead and purchase it, you won't regret, trust me। Thank you for watching the entire video। I hope you have liked the video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा to make some more videos for you। Thank you for watching and stay happy, stay blessed, bye bye।